Dear students, here we have question 4, and this differential equation is second order differential equation. Here the dependent variable y is missing. Here the dependent variable y is missing. Let this lowest order derivative be equated to p. Now differentiating, we get d square by dx square equal to dp over dx. Putting these two values here, so this equation becomes, for this du by dx we will put its value, which is p, and we will put for this its value, which is dp over dx. Now this differential equation can be written in this way. Now dividing this equation by this x, so we get this one. This is linear differential equation in p. This differential equation is linear in p. This minus 1 over x will be used to find integrating factor. So we have to determine the integrating factor by using this result. Integral 1 over x will be log x. This minus will be shifted here. Now these two will cancel each other, so 1 over x is the integrating factor. Now to the general solution of linear differential equation will always be equal to this p will be used here, multiplied by integrating factor. This q will be used, this is q, this 3x is q, multiplied by integrating factor. Now putting its value, for q we put this 3x, and integrating factor is 1 over x, which is here. This x and this x will be cancelled. We get integral 3 dx, which is equal to 3x plus c1, which is concept of integration. Multiplying this equation by x, so we get p, and here we get 3x square plus c1x. Now this p is divided by dx. Here we have p. This p is divided by dx, so for p we put its value, integrating both sides. So integral of divided by dx is equal to y, integral of the right hand side. Now integral of 3x square is 3x cube over 3. 3 and 3 will be cancelled. Here is c1 x square over 2 plus c2, which is constant integration. Now for c1 over 2, here the constant c1 over 2, replace c1 over c2 by c3. Y is equal to x cube plus c3 x square plus c2. This c3 was actually c1 divided by c2. So this is the general solution of the differential equation where the dependent variable y was missing. Now this is another differential equation. The dependent variable y and the independent variable x are missing. Here both x and y is missing. Let the lowest order derivative be equal to p. So du by d is equal to p, equation 1 implies. So if we equate, if we differentiate this equation, we get d square y by dx square is equal to dp over dx. So for this we will put its value, which is dp over dx. This is p. So we get here p square plus 1. Separating the variable, so here the variable have been separated. Integral 1 over 1 plus p square dp is equal to tan inverse p. Integral dx is equal to x plus c1. C1 is constant of integration. Now this tan inverse will be written here. Now this p is divided by dx. This is p, which is divided by dx. Integrating both sides, so this is the integration with respect to x. These three values, this represents differential of y. Differential of y is always equal to derivative of y with respect to x into dx. So these three is differential of y. This is integral sign, and here we will put dy, and this integral dy is equal to y. Here this is f dash, this is f, so log denominator, this minus will be used here, and here we will put constant integration, which is log c2. Now log of c2 minus log of this, which is equal to log of c2 divided by this one. Y is equal to this. Now writing this logarithmic equation is exponential form. Here the base is e, so writing this logarithmic equation in terms of exponential, so we get e power y. E power y is equal to this one. Now
multiplying both sides by cosine, so we get e power y cosine is equal to c2. So this is the general solution. Here we have another differential equation. This is second order differential equation. In this differential equation, the independent variable x is missing. Here independent variable x is absent. Let in this differential equation we should equate the lowest order derivative by p. Let dy by d is equal to p. Now differentiating both sides with respect to x, so we get d square y by dx square. D square by d square is always equal to derivative of dy by dx. Now this dy by dx is equal to p, dy by d is equal to p, so putting its value, and here d by dx are p, this dx will be written here, and here we will introduce dy here and here. Now this dy by dx, this is dy by dx, so for this we will put the value, so we get this this is p, and this dp over dy will be here. So this second order derivative is equal to p dp over dy. This method will be used to those differential equations where the independent variable x is missing. Whenever independent variable x is missing, then we will replace the second order derivative by p dp over. Previous question we use this formula integral f dash divided by f is equal to log denominator. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसी फार्मूले को यूज़ किया कि इंटीग्रल एफ डैश डिवाइड बाई एफ विल बी ऑलवेज इक्वल टू लॉग डिनोमिनेटर। अब प्रीवियस स्लाइड में जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम हल कर रहे हैं, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम हल करें तो डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर की जगह हम पी डी पी और डी वाई पुट करेंगे, साथ में 2y लिखेंगे, और डी वाई बाई डी की जगह हम इसी p को पुट करेंगे। तो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इम्प्लाइज, तो हमने पुटिंग किया। नाउ रीअरेंजिंग, दैट इज सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गए। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे f है, देख ले, दिस इज f डैश, तो अगर यहाँ पे f हो, यहाँ f डैश हो तो लॉग डिनोमिनेटर, तो इस तरह ये f है और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है 2p, so if this is f then this will be f dash, so integral of this quotient is log denominator, and here integral of 1 over y is log denominator plus log c, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कैंसलिंग log, इसी log को और इसी log को हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास ये आ गया। इसी 1 को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये आ गया। इसी p की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, नाउ वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, या सबसे पहले हम वेरिएबल सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन है दोनों साइड में, तो यहाँ पे अगर हम c1 लगाए तो यहाँ पे 1 और c1 लगाएंगे। अगर ये f हो तो ये f डैश है, c1y माइनस 1, अगर इसका डिफरेंशिएशन हम मालूम करें तो विद रिस्पेक्ट टू y, डेरिवेटिव ऑफ c1y माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू y इज c1, तो हमने c1 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे 1 और c1 लिखा। अगर ये f है तो ये f डैश हो गया, तो इंटीग्रल ऑफ f इनटू f डैश इज ऑलवेज इक्वल टू इंक्रीज द पावर ऑफ f एंड डिवाइड बाय द पावर ऑफ 10, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पे इंटीग्रल प्लस माइनस डी एक्स हमारे पास आ गया प्लस माइनस एक्स। अब 1 ओवर 2 हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, और यहाँ पे 1 ओवर 2 है जो हम एज स्क्वायर रूट के तौर पर यूज़ करेंगे, और ये c2 अपनी जगह पे। अब दोनों साइड में हमारे पास यहाँ पे 1 ओवर c1 है, तो इसी c1 को हमने दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास x के साथ c1x आ गया। और अगर यहाँ हम c1 c2 लिख दें तो इसकी जगह हम c3 भी लिख। अनदर डिफरेंशियल इक्वेशन, this is here in this differential equation the independent variable x is missing, independent variable x is absent, so let dy by d is equal to p, differentiating we get, जब कभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x मिसिंग हो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए हम इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। Remember, whenever the differential equation, if the differential equation is such that the independent variable x is missing,
then by the solution the lowest order derivative will be equated to p, and the second order derivative will be equal to p dp over dy. These two values will be substituted here. So here this is the substitution. Now rearranging, this is the simplification taking p common. So either p is 0 or this bracket is 0. When p is 0, that is dy by dx is 0. Integrating, we get y equals c, and when p is 0, then this may also be 0. Now solving this differential equation, we get y dp over dy is equal to this. These two terms will be shifted here, separating the variable. Integral here, integral of 1 over p minus 1 dp is, that is तो ये क्या आएगा, p minus 1, derivative p minus 1 is 1, so log denominator, और यहाँ पे 2 अपनी जगह पे, इंटीग्रल 1 over y log y है, और ये कांस्ट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको इन दोनों को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये log है, तो इसी log को और इसी log को हम ख़त्म करते हैं, तो ये आ गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी 1 को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो p की जगह, इसी p की जगह हम dy by dx पुट करते हैं, और सेपरेटिंग द वेरिएबल्स जब हम करते हैं तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गए। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, इंटीग्रल ऑफ dx बराबर है x, इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू x है, और ये कांस्टेंट इंटीग्रेशन है। यहाँ पे अगर हम c1 लिख दिए तो यहाँ भी c1 लिख दिए, यहाँ पे c1 इंटू dy है, जिसको हम लिख सकते हैं d इंटू c1y। अब ये इंटीग्रेशन फार्मूला है, इंटीग्रल 1 over 1 plus c1y होल स्क्वायर d ऑफ c1y विच इज tan inverse c1y, और इसी c1 को हम दूसरी साइड पे ले जा सकते हैं, और इसी कांस्टेंट की जगह हम c3 पुट कर सकते हैं। अब इसी tan इनवर्स को हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। सो दिस इज दी जनरल सोल्यूशन। अब यहाँ पे एक और डिफरेंशियल इक्वेशन है थर्ड ऑर्डर, और dependent variable y missing here, the dependent variable y is missing, the lowest order derivative is this one. Thus let whenever here we have a third order differential equation where the dependent variable y is missing, so for the solution we will equate the lowest order derivative by p. Now we will differentiate both sides. यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y मिसिंग है, तो हम लोएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को p से इक्वेट करते हैं। अब इसी को हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा dp ओवर dx। तो थर्ड ऑर्डर के लिए हम dp ओवर dx यहाँ पे पुट करेंगे, साथ में x लिखेंगे, और इसको हम रिप्लेस करेंगे बाई p। इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं इसी को, तो हमारे पास दोनों साइड हमने डिफरेंशिएशन किया, तो ये थर्ड ऑर्डर आ गया वही अपनी जगह पे। अब दोनों वैल्यू को, इसको और प्रीवियस स्लाइड में डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर पी को, इन दोनों वैल्यू को हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना है, तो ये आ गया। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया। यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट किए गए हैं। नाउ इंटीग्रल ऑफ बोथ साइड, सो इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर पी डी पी इज इक्वल टू log p, और इंटीग्रल ऑफ 2 और x डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इन दोनों को हम इस तरह लिख सकते हैं। इसी 2 को हम यहाँ पे लिखते हैं log x स्क्वायर प्लस log c, जो इसके बराबर है, और इसी log और इसी log को हम कैंसिल करते हैं, तो ये आ गया। इस p एज डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, ये आ गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका ऑर्डर कम हो जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ये आ गया और ये कांस्टेंट आ गया। अब इसको हम मज़ीद इंटीग्रेट करते हैं, तो इसके साथ जब हम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये y आएगा, और यहाँ पे क्या होगा x क्यूब का इंटीग्रेशन है x4 ओवर 4, c1 का इंटीग्रेशन है c1x, और ये कांस्टेंट है 3 4 12, 3 इंटू 4 है c ओवर 12, c ओवर 12 को हम c3 कहते हैं, तो यहाँ पे c3 आ गया, ये अपनी जगह पे, ये अपनी जगह। सो दिस इज दी सोल्यूशन। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, और ये सेकंड ऑर्डर है, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x मिसिंग है। तो जब कभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x मिसिंग हो, तो हम लोएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम p लेंगे, और इसको हम किस तरह लिखेंगे, जब यहाँ पे हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो राइट साइड में p dp और dy आएगा। whenever we have our differential equation where the independent variable x is missing,
we will always use this equation and we will always use this result. तो जब वो x मिसिंग हो तो इन दोनों को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये आता है इसकी जगह हमने इसको यहाँ पे पुट किया, इसी y को अगेन यहाँ पे लिखा, इसकी जगह p लिखा तो p स्क्वायर आ गया, ये p है। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, इसी p को हम यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं और p कॉमन निकालते हैं। Here we have a product of two factors equal to 0, so either the first factor is 0 whose solution is this, or the second factor is 0. Now we have to solve this second factor, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इन दोनों से माइनस कॉमन निकाला। नाउ सेपरेटिंग द वेरिएबल, तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं ऑन इंटीग्रेशन। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो log y आएगा, यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो log p-1 आएगा और साथ में कांस्टेंट इंटीग्रेशन आएगा। तो ये हमने दिस इज़ दी वैल्यू ऑफ दी इंटीग्रेशन। अब इन दोनों को हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे दो log है और दरमियान में माइनस है, तो इसी c1 को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और इसी को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब इसी log और इसी log को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, दिस इज़ p, दिस p इज़ dy बाई dx। अब हम इसको मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं, y इंटू -1 इज़ -y, जो यहाँ पे ट्रांसपोज किया गया है। और इसी इक्वेशन को हम किस तरह लिखेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल, तो इस तरह लिख सकते हैं। नाउ इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ पे y है, y के साथ हम c1 माइनस c1 लगाते हैं। अब y प्लस c1 को हम y प्लस c1 से डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, इसको हम इससे डिवाइड करते हुए ये आएगा और इंटीग्रल dx से x आएगा और ये कांस्टेंट है। अब इंटीग्रल 1 dy y है और यहाँ पे c1 अपनी जगह पे है और इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर y प्लस c1 क्या है, log डिनोमिनेटर। अब इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं, इसी y को हम यहाँ पे रखते हैं और इसी को हम दूसरी साइड में ले जाते हैं। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन।